Okay, guys, so good evening to all of you. I welcome all of you to another class of SSB Crack Exam. अभी हम करने वाले हैं NDA 1 2023 में इंग्लिश की तैयारी, तो जल्दी से जुड़ जाइए. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास नाउ, गाइज. अभी हम लोग कर रहे हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, जिसके हम कर रहे हैं MCQs क्लास 7, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में. ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास नाउ. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. ओके गाइस, सो जल्दी से हम लोग हर क्लास की तरह आज का आप लोगों का शेड्यूल देखेंगे. तो आप लोग सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज 13 दिसंबर है और आप लोगों को 8 बजे 9 बजे स्टूडेंट्स आर गेटिंग डेली करंट अफेयर्स एंड डेली डिफेंस अपडेट्स, राइट. फॉलोड बाय दैट 9 बजे आपको एसएसबी इंटरव्यू लाइव क्लासेस कराई जा रही हैं. उसके बाद अगर मैं बात करूं 4 बजे, तो हमारा स्लॉट अभी ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है. आपको सबसे पहले कराया जा रहा है इंग्लिश ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स. फॉलोड बाय दैट विल बी डूइंग करंट अफेयर्स और 6 बजे होगी आपकी मैथ्स की क्लास. ठीक है, उसके बाद आपका सीडीएस का स्लॉट शुरू हो जाता है. फॉलोड बाय दैट वी हैव एफ कैट का स्लॉट. ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं. ठीक है गाइस, और जल्दी से अभी हम लोग टॉपिक की बात करेंगे जो आज हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, ओके गाइस, तो अगर हम लोग टॉपिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्वेश्चंस यूजुअली आर रेंज फ्रॉम मॉडरेट टू एडवांस लेवल ऑफ डिफिकल्टी. ठीक है, बट आई वुड से इट इज ऑल इन ऑल प्रिटी इजी टॉपिक. ठीक है, अगर इसकी बात करें क्वेश्चंस, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो क्वेश्चन यूजुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं. कुछ एक आधा से ट्रिकी आ गया तो अलग बात है. ठीक है, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, ऑब्वियसली आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए. यू शुड हैव अ फेयर आइडिया कि कहाँ पे सब्जेक्ट आता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, क्या ऑब्जेक्ट होता है, बेसिकली यहाँ पे प्रेडिकेट के पार्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट. और जो भी सीक्वेंस आप चूज कर रहे हैं इट शुड मेक सेंस. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन क्वेश्चंस में. ठीक है, तो अभी जल्दी से हम बात करते हैं क्वेश्चन की. तो डायरेक्शन में हम देख सकते हैं क्वेश्चन यूजुअली ऐसे ही आता है. देयर इज नॉट मच चेंज. ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ विच हैव बीन जम्बल्ड, राइट. तो कोई भी आपको क्वेश्चन दे देंगे, अगर ऐसा बोल देंगे शी इज, है ना, इसको उन्होंने एस कर दिया, गोइंग, इसको आर कर दिया, हर, ओके, टू हर, इसको पे कर दिया, पार्टी, राइट. तो पी, अभी क्यू बचा ना, हाँ, इसको क्यू कर दिया. सो बेसिकली दे विल जम्बल द ऑर्डर. तो आपको सूटेबल एक ऑप्शन चूज करना होगा जहां पे आपको लगता है कि वो ऑर्डर एकदम सही जा रहा है, लाइक इट्स मेकिंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एंड यू हैव टू मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली. ओके गाइस, सो दिस इज गोना बी योर क्वेश्चन. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है. अभी जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, आई होप एवरीवन इज रेडी. तो जल्दी से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से. ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो कि है स्क्रीन पर. द कैरेक्टर ऑफ पी हु आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स क्यू, फिजिकल ट्रेनिंग कैन शेप वेल आर यंग बॉयज एंड गर्ल्स एस, आर पी एस क्यू, पी क्यू आर एस, क्यू एस आर पी, क्यू आर एस पी. बताइए. मैम ऑप्शन ए. हम्म ऑप्शन ए मैम. ऑप्शन ए मैम. हम्म Any other answer, guys? ऑप्शन ए किसी का? मैडम. Yeah, guys, see, when I talk about P and Q, they can't be our answers इसमें, क्योंकि who और the इससे नहीं शुरू होगा. It is basically talking about the subject or the focus of the sentence is physical training. Okay, so we are supposed to choose that option only. So physical training can shape well what? The character of young boys and girls who are going to be responsible citizens. We already know that how important is physical training. So it just talks about that. So that's going to be your answer. Great. Next पे चलेंगे. ठीक है. Technology transfer from one country to another P, either through a government policy Q or via private channels of communication R, implies the transfer of technical knowledge as RPSQ, PSQR, QSRP, QRSP.
मैम ऑप्शन बी। बी। ओके। ऑप्शन बी मैडम, बी फॉर ब्रावो। Okay, for others, guys, you can also answer in the chat box. ठीक है। बी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। Absolutely right, guys, because we are only and only talking about technology transfer from one country to another. ठीक है। एक मिनट। हाँ, implies the transfer of technical knowledge, right? उसके बाद हम चलेंगे either through a government policy or via private channels of communication. So very good. That would be the only answer. Next. To find an answer to these questions P in an attempt Q, the secretary announced that a national workshop on technical training had been organized R by the Confederation of Engineering Industry S. Okay. RPSQ, PSQR, QPRS, QRSP. ऑप्शन ए। A. Option A, ma'am. Okay, let me see option A. मैम एक What is मिनट, it? हाँ हाँ, मैम प्लीज I'm एक मिनट रुक waiting. जाइए। Okay. ऑप्शन ए। A. ऑप्शन सी। ये कौन है? बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हुआ. Okay. Okay, ऑप्शन guys. सी। Okay, let's see the answer, guys. नहीं नहीं नहीं. अरे A कैसे हो सकता है आंसर? Just have a look at it now. C can be the only answer. See, let's look at A first. Okay, so if I say RPSQ, ठीक है? So if I talk about it, क्या ये मीनिंग बन रहा है? देखो, the secretary announced that a national workshop on technical training had been organized to find an answer to these questions by the Confederation of Engineering Industry. ठीक है, सो ठीक है। इन एन अटेम्प्ट क्यों कैसे हो सकता है? इन एन अटेम्प्ट तो ऐसा लग रहा है वी जस्ट ट्राइंग टू, ठीक है चलो डाल देते हैं, राइट? सो चेंज करेंगे इन एन अटेम्प्ट, ठीक है, इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू दीज क्वेश्चंस। उसके बाद क्या हो जाएगा? द सेक्रेटरी अनाउंस दैट अ नेशनल वर्कशॉप ऑन टेक्निकल ट्रेनिंग हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। आई होप इट्स क्लियर नाउ गाइस। तो ए बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज इन एन अटेम्प्ट तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा लास्ट में आने का, ठीक है? सो दैट इज द ओनली आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। गेटिंग अ प्राइज इन स्पोर्ट्स एक्सेट्रा P, but my daughters Q, you have been writing to me often about distinguishing in a fancy dress show, comma, or such achievements make me apprehensive of any progress S. RPSQ, PSQR, RPQS, QRSP. ले लो टाइम ले लो इसमें, बट ऑप्शन सी। हम्म ऑप्शन सी मैम। हम्म ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके। ओके, ऑप्शन सी। ऑप्शन ठीक है. Okay, let's look at the option C then. Absolutely right, guys. The person is kind of complaining. We can see that you have been writing to me often about distinguishing in a, basically make a distinction between fancy dress or getting a prize in sports, but my daughter's such achievement make me apprehensive. Okay, that the person feel there is no progress. So absolutely correct. Great. Next पे चलेंगे. Conditions with fuel prices climbing to dizzy heights P,
but resentment arising out of harsh economic cue, which led to the recent protest in Myanmar are, it was not an inspiration for democracy. S. RPSQ, SQPR, RPQS, QRSP. मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मैम। Option B. Hmm. एक मिनट। Hmm. ऑप्शन बी मैडम। बी। ओके, चलिए 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 फिर देखते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट हाउ इट वाज नॉट एन इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी, हाउ बेसिकली इट टॉक्स अबाउट एक मिनट on democracy but resentment arising out of harsh economic condition with fuel prices climbing to dizzy heights which led to the हाँ ठीक है ठीक, करेक्ट करेक्ट है ग्रेट। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। Okay, so this is a huge one. Of choice for the entire spectrum of research, P has acquired the status of the experimental animal or the animal model system Q, particularly in the last 2 decades or so. The mouse are in the post-genetic engineering era of modern biology. S. RPSQ, SQPR, RPQS, SRQP. Option Hmm. B. What has acquired? You have said B, right? So it doesn't talks about key. What has acquired? Who has acquired? Guys, your sentence should be complete. मैडम एक मिनट। ऑप्शन बी। Option B. B, okay. चलिए फिर आंसर ऑप्शन डी देखते मैडम, ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी ऑप्शन डी। मैडम, ऑप्शन डी। Because see, if you talk about SQ, then you didn't even talk about what has acquired the status of experimental animal. We haven't even mentioned the animal, na? So in the post-genetic engineering era of modern biology, particularly in the last 2 decades or so, the mouse has acquired the status of experimental animal or the animal model system of choice for the entire spectrum of research. Okay, so this would be complete sentence because we have mentioned कि कौन सा animal है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, सो बी बिल्कुल भी नहीं हो सकता बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट, वी डिडंट मेंशन इट। चलो नेक्स्ट। Good governance and sound public policies for the benefit of its people, P, to provide leadership and to deliver, Q. More than ever before, the continued prosperity of Asia depends on the ability of its politicians and policymakers. S. RPSQ, SQPR, RSQP, SRQP. ऑप्शन सी। Option C. Option C. ऑप्शन सी मैम। Hmm. C then. Okay. Any other answer? चलिए देखते हैं फिर। Hmm. Yeah, guys, that is the only answer we have. Because even if I talk about R and P, it won't make any sense. ठीक है, तो बात करते हैं
इसी ऑप्शन की आर एस. So more than ever before, the continued prosperity of India depends on the ability of its politicians and policymakers to provide leadership and to deliver good governance and sound public policies for the benefit of its people. So that would make a complete and meaningful sentence. So that would be the correct answer. Great job. चलते हैं next question पर. Okay, to clear the backlog in respect of education and poverty alleviation programs, P, there is comma, however, comma, a strong perception that reservation Q, unless it is followed by sincere and intensive efforts, R, alone cannot transform the lives of oppressed people, S, QSRP, SQPR, RSQP, or SRQP, QP. नहीं. Option A. Option A, ma'am. Option A. ऑप्शन ए सभी का एक ही आंसर है फिर ठीक है. Option A. Yeah, this is actually pretty easy to answer. The answer has to be A because there's a strong perception. We can see ये clearly subject की बात हो रही है where we are talking about reservation, okay? That how reservation alone cannot transform the life of oppressed people unless it is followed by sincere and intensive effort to clear the backlog in respect of education and poverty, right? So that would be the answer. Great. चलो next पे चलेंगे. After decades of relative neglect and even reversal P, when land reforms were finally put back on queue, this may go down as the year R, the nation's policy agenda S, QSRP, SQPR, RSQP, RQSP. Option D. Okay. It would be Option C. ma'am. I think Ma'am, option D. Okay. Let's wait for others to also answer, then I'll show the answer. ma'am, option C. Okay. चलिए, let's see the answer. Yeah, the answer is DRQSP. So this may go down as the year when land reforms were finally put back on the nation's policy agenda after decades of relative neglect and even reversal. Right? So this would be the correct answer. Great job, guys. Next पे चलेंगे. Cultures and political structures P that it affects the entire Q climate in our world irrespective of national borders S. This is very easy. QSRP, SQPR, RSQP, RQSP. A. Ma'am, option C. Option C. Ma'am, option C. Just read it properly if it's making sense, so then answer, please.
Okay, let's see the answer. B, ma'am. It would be B. Yeah, so we can see the answer is D, right? So climate in, ठीक है, that it affects the entire world, okay, the entire world. Because if I write world here, I have to include the wala article. So on behalf of that, that cannot be the answer the other way around, how other students were answering. So the answer would be climate in, that it affects the entire world, irrespective of national borders, cultures, and political structure. ठीक है, so that would be the only answer out of these options. ठीक है, वहां पे द लगना भी जरूरी है. Is difficult P having a first child Q because of the significant R adjustment in your life? S. QSRP, SQPR, RSQP, QPRS. Option D. मैम ऑप्शन डी. Option D. Ma'am D. Option इसमें तो D. टाइम नहीं लगना चाहिए. ग्रेट. हम्म बताइए बताइए. ओके. एक मिनट. ये अभी ऑलरेडी मैंने आंसर दिखा दिया है तो. Okay, guys, the answer is D. It's very straightforward. इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा सोचने वाला. Just talks about that having a first child is difficult. उसके बाद they have just given the reason because of the significant adjustments in your life, right? So that would be the answer. Great. Next पे चलेंगे. Discrimination P occurs because of a systematic Q. Poverty-stricken areas are crime in S. SRQP, SQPR, RSQP, QPRS. मैम ऑप्शन ए. Option A. Option A. A, ma'am. A. Ma'am, option A. Option A. ऑप्शन ए. Okay. What about others? Okay, great job. Yes, absolutely right. We are talking about crime. Crime in poverty-stricken areas occurs because of a systematic discrimination. तो उसको बस reverse कर दिया गया order को. So that is the only answer. Very good. नेक्स्ट पे चलते हैं. रीजंस P graduating from Q high school is are important for many different SRQP, SQPR, D. RSQP, QRSP. Option D. मैम ऑप्शन डी. Option D. Option D. Option D, ma'am. Option D, ma'am. Okay, any other answer, anyone? D. Okay, चलिए फिर देख लेते हैं. Absolutely right, guys. It just talks about graduating from high school is important for many different reasons, and obviously education is important. So it's talking about that. Very good. Next पे चलेंगे. Remodeling a kitchen P successfully requires Q research and R a good IS. ये तो बहुत ही आसान है. PQRS, SQPR, RSQP, QRS. A. मैम ऑप्शन ए. Option A. Option A. Ma'am, option A. ठीक है. ओके. हम्म चलिए देखते हैं फिर आंसर. Yes, it just talks about that how remodeling a kitchen successfully requires research and a good eye. So that would be the correct answer. Very good, you guys. Great job. Next पे चलेंगे. In the lecture hall, P are taking the exam Q
tomorrow morning, comma, are all the students as PQRS, SQPR, RSQP, QRSP. मैम Option ऑप्शन C. सी सी होगा। Option C, ma'am. Option C, ma'am. Option C. C, ma'am. Okay. Any other answer, anyone? Option C. Okay, great. Yes, that is the only answer. Just talks about that how tomorrow morning they have already put that comma, so it's pretty easy to understand. All the students are taking the exam. Where are they taking it? In the exam hall. तो prepositional phrase के द्वारा they have answered. Great. Next पे चलेंगे. Is your motivation P? Want to know Q for the job or what we S? PQRS, SQPR, RSQP, QRSP. मैं ऑप्शन बी। Option B, ma'am. Option B. Hmm. Option B. B, ma'am. B. Same. Let's wait. Chalo, guys, we'll see the answer now. Right, so you all were right about it. So it is SQPR. What we want to know is your motivation for the job. Right, so that would be the correct answer. Great. Next पे चलेंगे. Has broken down. P. Bought last year. Q. The car, comma, that follow S. PQRS, SQPR, RSQP, QRSP. Option C. Option C. मैम Option ऑप्शन C, सी। ma'am. मैम सी। Yeah, this question doesn't require much thinking. तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर सकते हो. Option C, ma'am. Great. Yeah, that is the only answer. The car, right? Because we are talking about the car that Pearl bought last year has broken down, not working. Great. Next. Know each other. P. My friend from Q. College and the woman, comma, R who bought our house. S. PQRS, SQPR, RSQP, QRSP. Option D. Option ऑप्शन डी मैम। D. Option D, ma'am. Option D. Okay, let's see. Q. ठीक है. Okay, चलते हैं. Yeah, absolutely correct. My friend, it's very easy to understand that from college ही होगा. It can't say who bought, right? My friend from college and the woman, comma, who bought our house, they know each other. So absolutely right, guys. Very good job. Next पे चलेंगे. Believed that P, it is now Q. Dinosaurs were birds, comma, rather than reptiles. Okay. PQRS, SQPR, RSQP, QPRS. Option D. मैम ऑप्शन डी। Option Option D. D, ma'am. Okay. Great. Great, 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 great. Chalo, very good. It's very easy, right? So it is now believed that dinosaurs were birds, comma, rather than being reptiles. So correct. Very good. Next पे चलेंगे. Phone book P before World War II Q the New York R contained 22 Hitler's S. PQRS, SQPR, RPSQ, QPRS. Option C. Option C, ma'am. मैं ऑप्शन सी। Hmm. Hmm. C. Okay.
Option C. Hmm. Okay, guys, let's see now what is the answer. Absolutely correct. The answer is RPSQ. So the answer is the New York phone book contained 22 Hitlers before World War II. Correct. Next पे चलेंगे. For an RP, because it had to wait Q due to dense fog, R the plane couldn't take off. S. PQRS, SQPR, RPSQ, SPQR. Option A. Option A. Option B. Okay. Option D, ma'am. Option A भी बोला ना, for an R, because it B, had ma'am. I think B. Option Option D, ma'am. C. सारे ऑप्शन आगे गए. Due to Option D. Option B, ma'am. B. okay. Now Option option D, D. ma'am. Option D, ma'am. Let's D. look at the answer. The answer is D, SPQR, right? So let's look at it. The plane couldn't take off for an hour because it had to wait due to dense fog, right? So we have to take care of dependent and independent clause also. So this would be the correct answer. ठीक है? ये आपका correct option हो जाएगा. Next, she complained that it took a month P to clean it Q. The house R was so dirty S. PQRS, SQPR, RPSQ, RSPQ. हाँ. Option A. Hmm. Option A, ma'am. Ma'am, option A. Option A, ma'am. Now option A. A, ma'am. Hmm. Option D. Okay, some people are saying it's A. She complained that it took a month to clean it. The house was so dirty. Option D, ma'am. Hmm. Yeah, the answer has to be D ना, because first वाला तो sense ही नहीं बन रहा. So RSPQ ना. The house was so dirty. ठीक है? She complained that it took a month to clean it. Okay. So that would be the correct answer. पहला तो कोई sense ही नहीं बन रहा. So yeah, correct. Next पे चलेंगे. A pair of trousers to the P, a man handed Q, departmental store clerk R, and said, I would like these altered, please. S. PQRS, SQPR, QPRS, RSPQ. Now Option option C. C. Option C. Option C. Option C, option C. ma'am. Hmm. C, ma'am. Option C, ma'am. तो बहुत आसान है. You already know the subject ना, and there's only one option. So you don't have to think much about it. The answer is C. That a man handed. किसको hand किया उसने? Basically a pair of trousers to the departmental store clerk, and he said, I want these altered. खत्म. As easy as that. चलो. Which threaten the very existence of democracy P. It is generally assumed Q. The right to vote also confers a right of power R by the admirers of democracy that S. Option B. Option B. Option B, ma'am. Option B. Okay.
No, option B. ओके 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 डोके, चलिए देखते हैं फिर इसका आंसर. द आंसर इज बी, QSRP. इट इज जनरली assumed, right, by the admirers of democracy that the right to vote also confers a right for power which threatens the very existence of democracy. Very good, guys. Last question आज for practice ये रहा. His invention P to give us the railway engine Q was used later R by other clever men. S PS PRSQ, QSRP, QPRS, RSPQ. Option A, Option ma'am. A. Option A, A. Option A. Option A, ma'am. Hmm. Any other answer, guys? चलिए फिर. Absolutely correct, because we are talking about invention. Very good. His invention, right? उसके बाद है was later used by other clever men to give us the railway engine. So that would be the correct answer. Great. Very good, everyone. Okay. Okay, guys. So practice questions के बाद आप लोगों के homework के questions है. Please have a look at it. ये रहा आपका first question. ठीक है? I'll move on to the second one. This is your third one. Fourth. And ये रहा last. Okay, guys, so these are the questions for your homework. Please do not forget to do it. I'll be seeing all of you in the next class where we'll be doing class 8. We'll be very soon done with this topic altogether. ठीक है? So, yeah, that's it from my end, guys. If anybody wants to ask anything, they can ask. Otherwise, we are just going to conclude the session now. Right? We are done with the questions. Thank you, ma'am. Thank you, guys. Take care. Bye-bye. जय हिंद मैम. जय मैम. जय हिंद. मैम जय मॉक हिंद. टेस्ट कब होगा? मॉक टेस्ट का अभी ऑनेस्टली मेरे को कुछ आइडिया नहीं है. आई लेट यू नो. ठीक है, क्या है. मैम एक बार क्लास में मॉक टेस्ट लगा लेते हैं. हाँ, मैं एक बार आई जस्ट कंफर्म इट एंड आई अपडेट. डोंट वरी, अभी पॉजिटिवली इस वीक तक आई कंफर्म. ओके गाइस, सो आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस. ओके, बेसिक. Okay, guys, so the last announcement is for everyone who is watching us right now. Please do not forget to take SSB Crack Exam NDA का online course because it's gonna be very much helpful. क्योंकि आपको यहाँ पे मिल रहा है एग्जाम की लाइव क्लासेस, उसके साथ स्टडी प्लान और एनालिसिस. ठीक है, notification and exam dates which students get daily. So let's talk about English ND exams. Okay, you all can see you are getting 596 lessons, जिसमें से आपको video lectures और study material available है. Right, so let's talk about the topic. अब अगर अभी हम ordering of words या sentences कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आपको topic introduction के साथ material भी दिया गया है. ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारे क्विज वाले क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. राइट, उसके बाद इफ आई स्क्रॉल डाउन 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 आई विल ऑल्सो फाइंड आंसर कीज. ठीक है गाइस, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट एंड आई विल बी सीइंग ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद गाइस.